Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the 6th video in which I am going to discuss assertion reason type questions which are going to come in 2021 CBSE board exam. In this video, I will discuss 14 questions, and out of these 14 questions, many of them have already come in AIMS entrance exam. Now let us see. Assertion reasoning type question. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम. The following questions consist of two statement. हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होगा. Assertion A statement and reason R statement. And then you have to mark the correct alternative. कैसे चूज करेंगे करेक्ट ऑल्टरनेटिव? देखिए, if both A and R are true, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं and R is the correct explanation of A, then mark A. If both A and R are true, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, but R is not correct explanation for A, then mark B. If A is correct but R is not correct, then mark C. And if both the statements are not correct, then mark D. Okay. Now come to question number 1. Assertion. Adenine cannot pair with cytosine. Correct statement है ये. So किससे करता है adenine pair? Adenine always pair with thymine and guanine pair with cytosine. So adenine cannot pair with cytosine is a correct statement. Reason देखिए. Adenine and cytosine do not have perfect match. कौन सा perfect match नहीं है दोनों के बीच में? Between hydrogen donor and hydrogen acceptor site. This is the correct statement and hence they cannot pair. And this is the correct statement as well as the correct reason. क्या होता है इसमें? Adenine thymine के साथ पेयर करता है by 2 hydrogen bonds and guanine cytosine के साथ पेयर करता है by 3 hydrogen bond. So A cannot bind with C because they do not make the perfect match between the hydrogen donor and hydrogen acceptor site. So here A is correct, R is correct, and R is the correct explanation for A. So mark A. Come to question number 2. Assertion. DNA is more stable while RNA is more reactive. Correct statement है ये. DNA is more stable because it has got the double helical structure and moreover it has got thymine instead of uracil as a base which make it more stable. RNA is more reactive because it has got an additional OH group at 2' end of its nucleotides. That's why it is more reactive. So this statement is correct. See the reason. DNA was first discovered by Watson and Crick in 1953. This is the wrong statement. It was first discovered by Frederick Mischer in 1869. So here A is correct but R is wrong. So mark C. Question number C. Assertion. Insects visit flowers to gather honey. Wrong statement है. क्यों करते हैं visit insects flower को? Insects visit flowers to gather food, to gather nectar. So this is the wrong statement. Reason देखिए. Attraction of flowers prevent the insects from damaging other parts of the plant. This is again the wrong statement. Flowers क्यों attract करते हैं insects को? For pollination and not to prevent from damaging other parts of the plant. So both the statements are wrong. So mark D. Come to question number 4. Assertion. The megaspore mother cells divide by meiotic division to produce 4 spores. This is the correct statement. Now see the reason. Megaspore mother cells are diploid. Yes, they are diploid having 2n number of chromosomes. And megaspores are haploid. Yes, they are haploid. They have got n number of chromosomes. This is the correct statement but not the correct reason, correct explanation. तो correct explanation क्या है assertion का? The megaspore mother cell divide by meiotic division because during meiosis the chromosome number reduced to half. As a result, 4 haploid spores are formed. This is the correct explanation. So here A is correct, R is also correct, but R is not the correct explanation for A. So mark B. Question number 5. Assertion. Drosophila melanogaster is widely used in genetic research. Yes, it is widely used in genetic research. Correct statement है ये. Reason देखिए क्या लिखा है. Drosophila melanogaster is readily available insect. This is again the correct statement but not the correct explanation. तो क्या है correct explanation? Drosophila melanogaster is widely used in genetic research because it can be grown easily in synthetic medium in laboratory. It completes its life cycle in 2 weeks and moreover, in single mating,
it produces large progeny. And one thing more, 75% of the gene that cause diseases in humans are also found in Drosophila. So these are the reasons, that's why we use Drosophila melanogaster in genetic research. So here A is correct, R is correct, but R is not the correct explanation for A, so mark B. क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए. इन 4 o'clock और स्नैपड्रैगन प्लांट एक क्रॉस किया गया बिटवीन होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रेड फ्लावर इंडिविजुअल. एज अ रिजल्ट पिंक फ्लावर आर फॉर्म्ड. यस, करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल करेक्ट है ये. रीजन देखिए क्या लिखा है. इन दीज प्लांट्स द फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाय 3 alleles. रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज डिटरमाइंड बाय 2 alleles ओनली. तो रीजन की जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसका. वी गेट पिंक कलर फ्लावर बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. When the cross is made between the homozygous white flower individual and homozygous red flower individual, we get pink flower because of incomplete dominance. So here A is correct, but R is wrong. So mark C. Come to question number 7, assertion. Organ transplantation patients are given immunosuppressive drugs. Correct. जिन पेशेंट्स के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम आपके सामने है, साइक्लोस्पोरिन ए, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. और ये क्यों दिए जाते हैं, देखिए रीजन देखिए. ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज हैज एंटीजेंस. यस, व्हाट दे डिड, दीज एंटीजेंस दे स्टिमुलेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट. एज अ रिजल्ट patients start rejecting the organs, start fighting the organ because of this immune response. और इसको कम करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को लो रखने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, सो दैट organs will be accepted by the patient. Clear? So here A is correct, R is correct, and R is the correct explanation for A, so mark A. Question number 8 पर आइए. Assertion. Histamine is related with allergic and inflammatory reactions. Correct statement है ये. Reason देखिए क्या है. Histamine is a vasodilator. Yes, this is the correct statement and correct reason also. What happens देखिए, histamine कहाँ से produce होता है. It is produced by mast cells. और ये क्या करता है, ये blood vessels को dilate कर देता है. As a result, blood start flowing towards the site of your body the allergens affected. And this cause inflammation. So here A is correct, R is correct, and R is the correct explanation for A. So mark A. Question number 9 पर आइए. Assertion. Animals adopt different strategies to survive in a hostile environment. Correct statement है. Animals adapted होते हैं to different environment और different strategies को adopt करते हैं to live successfully in the environment. ये correct statement है. Reason देखिए. Praying mantis, ये एक इंसेक्ट है. इट इज ग्रीन इन कलर विच मर्जेस विद द प्लांट फोलिएज. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट रीजन. क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रेइंग मेंटिस का कलर ग्रीन है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स. ये एक अडेप्टेशन है प्रेइंग मेंटिस के अंदर. ओके, सो प्रेइंग मेंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्ज विद द प्लांट फोलिएज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर. सो हेयर assertion is correct and reason is correct, and reason is the correct explanation for A. So mark A. Question number 10. Assertion. Allelopathy is a form of amensalism that occurs in plants. Correct. देखिए क्या होता है इसमें. Some plants they produce chemicals, और ये केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं ये दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और अपने आप उनको प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अमेंसालिज्म. बट हेयर केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, सो दिस इज कॉल्ड एज एलिलोपैथी इन प्लांट्स. And so allelopathy is a form of amensalism that occurs in plant is a correct statement. See the reason. Association of rooting plants with fungal hyphae. इन दोनों का association देखिए क्या है. Is an important example of amensalism. Wrong. It is an example of mutualism, where both of them they live together for the benefit of each other. So here A is correct but R is wrong. So mark C. Question number 11 पर आइए. Assertion. Bread and other such baked products are porous and soft. Yes.
ब्रेड इज पोरस एंड सॉफ्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन देखिए क्या है, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल एस्केप ड्यूरिंग बेकिंग, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए डो में ईस्ट मिलाया जाता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल इज प्रोड्यूस, और जब ये एस्केप होते हैं तो इट मेक्स द ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट। सो हेयर ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सो मार्क ए। Come to question number 12. Assertion. In recombinant DNA technology, human genes are often transferred into bacteria or yeast. Correct statement है ये। आप देखिए ऊपर डायग्राम में देखिए एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिखाया गया है जहां पर प्लाज्मिड के साथ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स कर दिया गया है और रिकॉम्बिनेंट बनाया गया है और इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बैक्टीरिया के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, रीजन देखिए, बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, यस बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, ह्यूज पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड विच एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट रीजन। हमें डिजायर्ड जीन्स की बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं यहाँ पर। ओके, सो हेयर ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सो मार्क ए। Come to question number 13. Assertion. Self-pollination occurs in pteridophytes and monocots. Wrong statement है। Pteridophytes, they do not bear flowers, so no pollination is there. So this is the wrong statement. Reason देखिए, cross pollination occurs in gymnosperms and dicots. Again here, gymnosperms, they do not bear flowers, so no pollination. So this is again the wrong statement. Both the statements are wrong, so mark D. Come to question number 14. Assertion. The endosperm of angiosperms is generally triploid. Yes, they have got 3n number of chromosomes. 3 sets of chromosomes are present in the endosperm. This is the correct statement. Now see the reason. It developed from primary endosperm nucleus. Yes, और ये primary endosperm nucleus कैसे बनता है? It is formed by fusion of haploid male gamete and diploid secondary nucleus. This is the correct statement and correct reason. देखिए PEN इज इक्वल टू मेल गेमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बन रहा है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो हेयर PEN इज ट्रिप्लॉइड एंड इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। सो हेयर A is correct, R is correct and R is the correct explanation for A, so mark A. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.